Hi everyone, I'm Aryan. Thank you. We crossed our sub goal. Our family is growing, and I know it will become a very big fam. So, the video. Everyone is wrong about ChatGPT ads. I know it's a different topic today, but that's what we do. We are everywhere. अब तुमने हर जगह सुना होगा कि पूरा इंटरनेट इज बीइंग लाइक कि चैट जीपीटी इज फेलिंग, ओपन एआई इज डेस्परेट, क्योंकि चैट जीपीटी जो का जो वो है, ओपन एआई का सीईओ सैम ऑल्टमैन, दैट ही सेड ना इन सम इंटरव्यू दैट एड्स आर देयर लास्ट रिजॉर्ट. So now he is announcing that he will add ads in ChatGPT. So what does that mean? Why would they add ads if they are doing so well? And people are assuming if they need ads, they must be struggling. But I think it's my opinion. You can have your own. मैं थोड़ा सा knowledge gain कर रहा था, so that's what my opinion came from. But I think that your interpretation towards them is wrong. I will try to explain you all. So try to understand. Your interpretation is wrong because people are looking at that thing from only one direction. Everyone has their own POVs, own opinions, so here's mine, and you can have your own. Comments are always open. Feel free to. I won't judge. Like all. The failure assumption. When people hear ads, उन्होंने जब ये सुना कि Sam Altman is adding ads in the chat GPT, that will be their last resort. Ads will be their last resort because people think ad means the company needs money, but that's not how successful tech platforms evolved. Look at YouTube, where you are watching, Instagram, Facebook, all of them started same way. What, first they focused on growth, then they focused on attention, and after they capture attention, they focus on monetization. When a tool becomes a daily life, here is something interesting. Think about how people talk today. 5 years ago, people said Google it, and now people say just ask ChatGPT, just ChatGPT it. That change in language tells you something. A product has entered daily life, and once a tool becomes a part of a daily life, it becomes extremely hard to replace it. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम सुबह उठते and you will be like I won't open YouTube today. You just open it na. That's what we call habit lock. And ChatGPT is already entering that stage. अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, जैसे आई डोंट नो, मैंने कहाँ सुना था, आई गेस मैंने यो हनी सिंह, यो के कह रहा हूँ, हनी सिंह की वो जो नेटफ्लिक्स पे समथिंग डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें उन्होंने कहा था ना कि, या मैंने रील देखी थी, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट व्हेन डज अ सिंगर इज सक्सेसफुल, हम कैसे उस चीज को परख सकते हैं, हाउ कैन वी अज्यूम दैट अ सिंगर, अ म्यूजिक आर्टिस्ट इज सक्सेसफुल, जब उसके गाने शादियों में बजने लग जाएं. अब तो इतने नए नए आर्टिस्ट आ गए हैं. So you know there are all stages and there are all ways to assume someone's success. In this scenario, ChatGPT की हम सक्सेस उससे ले सकते हैं that has entered and that has captured a lot of attention and people, क्योंकि most of people are using ChatGPT now. Now the reality most people ignore. There is another factor that people forget. AI is extremely expensive. If you don't know, and if you know, then you know. Running large model requires huge infrastructure, massive GPU clusters, energy consumption, servers. Companies like OpenAI spend billions on compute. So eventually monetization becomes necessary. क्योंकि when ChatGPT was being made, तो सैम ऑल्टमैन और पता नहीं who made that thing कि the investors can only make 100x profit. मतलब होता है ना कि if you are investing in company, वो doesn't matter कितना तुम्हें रिटर्न आ रहा है, बट इसमें था कि वो सिर्फ 100x ही मैक्स इनका रिटर्न ले सकते हैं. नॉट बिकॉज द प्रोडक्ट फेल्ड, प्रोडक्ट इज ह्यूजली सक्सेसफुल. आई डोंट नो ह्यूजली इज अ वर्ड और नॉट, बट इट साउंड्स राइट. एंड स्केलिंग द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव. ये जो हम चैट जीपीटी पे हम कुछ भी टाइप करते, कुछ भी सर्च करते, इट रिक्वायर्स सो मच कंप्यूट, एंड यू नो हाउ मच वाटर दे आर कंज्यूमिंग. दैट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग. कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करे, कितना गैलन्स ऑफ वाटर दे आर कंज्यूमिंग. आई गेस इन बिलियंस दे आर कंज्यूमिंग. इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर मन करा तो. व्हाई पीपल मिस इंटरप्रेट इट. सो व्हाई आर पीपल जंपिंग द रॉन्ग कंक्लूजन. वी ऑफन जज कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय यूजिंग simple signals. We see ads, we immediately think, bro, that's struggling.
Struggling comes in our mind first. ये company तो struggle कर रही है if they need ads. But how do you advertise anything? And reality is more complicated. A platform can be massively successful and still introduce ads because monetization usually comes after attention is captured. If ads actually happen, what does it mean for us? Now let's assume ads do appear. What does it actually change for the users? Probably not as much as people think. We've seen this pattern already. People complained about YouTube ads. मैं भी करता हूँ. But we use it every day. I know जैसे वो the अगर हम अपने वो 5 सेकंड कंबाइन कर ले जो हम एड स्किप करने में हमेशा करते हैं कि वो 5 सेकंड जो हम रुकते हैं एड्स देखते ही नहीं है कि क्या है किसकी एड्स आ रही है और सबसे इरिटेटिंग तो हमें वो लगती है जो अनस्किपेबल एड्स होती हैं मैं भी बहुत इरिटेट होता हूँ सो सम पीपल यूज अनदर ब्राउजर मतलब जिसमें एड्स यू कैन ब्लॉक सम पीपल बाय प्रीमियम बट most people wait. People complained about Instagram ads, but still they scroll. Habit is stronger than irritation. Get this, once a tool becomes useful enough, people tolerate the monetization layer. Cultural signal. And you know what? Here's something interesting. Technology becomes culturally important when it enters stories. There's even a movie being made called Artificial, if you don't know it. And in that movie, Andrew Garfield, one of my favorite actors and celebrities, is playing Sam Altman. जैसे social network थी ना, think about that. A movie about a CEO of an AI company. That doesn't happen unless the technology has already shaped culture. Maybe they are desperate. I don't know, but this much big companies already have so much minds behind them. Of course, if I have this billion-dollar company, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से तो दे ऑल हैव देयर ओपिनियन उनका एक पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है दे ऑल मेक डिसीजन कोई सिंगल सैम ऑल्टमैन ही डिसीजन नहीं ले रहा है अब अगर तुमने देखा हो जैसे क्लॉड है एंथ्रोपिक का दे रिजेक्टेड द पेंटागन द हेड ऑफ द मिलिट्री यूएस मिलिट्री और हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएस मिलिट्री बट चैट जीपीटी हेल्प्ड देम व्हिच क्लॉड डिडंट so they are I guess thinking something which we can't or they are just being desperate. You can also tell me your thoughts, and I know the video is very short, but because I have so much good things incoming. इसके अगली मैं एक सॉर्ट ऑफ सीरीज ही बनाऊंगा आई डोंट नो कितने अगर मेरे को और आइडियाज आते गए तो वो सीरीज बड़ी होती जाएगी अदरवाइज 2-3 मैक्स वीडियोस आएंगी बट दे आर वर्थ वॉचिंग मैं इतना एक्साइटेड था बट आई हैव टू शेयर माई ओपिनियन ऑन this ChatGPT ads because it will become irrelevant and nobody will watch this. Thank you. I love you all 18 people. And before closing, as you all know, हमने अपना सब goal cross करा है. So we are going to change in front of you and this is my last sub goal because means मैं रखूंगा सब goals but this is generally the last sub goal of my luck or my faith kind of thing. जैसे 4 was my mama's birthday 6 वो और जब तक मैंने वीडियो मतलब इस टाइटल डालने लग गया था तब तक तो हो ही गए थे सो 16 इज माई फादर्स बर्थडे एंड आई विल नाउ ऐड माई लास्ट 27 आई विश आई कुड ऐड 21 बट सो इट्स समथिंग इसके बाद मैं जेन्युइनली फील करने लग जाऊंगा जिस दिन हमारे 27 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए कि दैट वी आई एम रियली अ समवन पीपल रियली love or love to hear about my opinions and I promise I won't disappoint you all because the love people are giving is bro it's very overwhelming ये कितने प्यारे बंदे का मेरे को कमेंट आया था एंड द लव इज़ वेरी ओवरवेलमिंग जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी इट ओनली गॉट 30 व्यूज बट उस पे जो 2 कमेंट आए हैं एक समर्थ सिंह का भाई लव यू भाई एंड एक टेक्नोलॉजी ब्रेन्स 3812 आई डोंट नो हु यू आर बट आई लव यू टू मैन भाई I will just paste their comment here so you can see that man genuine I don't have any words about this because this is they all are very important to me so thank you and love you all I hope I added some value in your lives and I promise I will be someone you can look up to